Hi and welcome to session number 7. This is the series called Quant Revision for Snap. Snap 2021 के लिए target कर रहे हैं. आज का topic है number systems. Today we'll take a look at this very important topic. Any exam, whether it's CAT, GMAT, IFT, Snap, NMAT, बिना number system के कोई भी exam incomplete है, or even the IP MAT, right? It's a very important topic, and today we'll look at a variety of questions जो नंबर सिस्टम से आते हैं. बिल्कुल बेसिक लेवल पे ही करेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं करेंगे. So all of the questions that we're going to discuss in today's session will all be critical. You need to be able to identify such problems in the exam, pick them and attempt those for sure, right? That's the okay. With that introduction, let me move on. Quickly tell you about myself. My name is Anand. I'm an educator with Unacademy. I've done my engineering and postgrad, engineering from VIT, postgrad from IIM Bangalore. I have worked in the FMCG sector for about 4 years. I have a decade's worth of experience in training students for entrance exams. Whether it's the written test, GD interview. By the way, I take 2 subjects. I help students with the quant and the verbal sections, especially grammar. So that's what I do. That's I think I derive a lot of joy in that. Before I start this session, quick sort of word bring to your notice. Do join us on social media. That's YouTube channel to dekh hi rahe aap. If you're on some other channel, make sure that you switch to CAT4MBA. But most importantly, I think keep following our updates on the Telegram channel. That's CAT4MBA. क्योंकि यहाँ पे सारे educators अपने courses के अपने sessions की details डालते हैं, and there's individual channel that I also have, Anand for Quant, where I share, the daily schedules. I share plenty of content there. So do follow me, guys. Okay, let's get right into the session for today, right? पहला question है ये ज़्यादातर most of the questions in today's exercise, in today's problem set are all questions that have come in past Snap exam papers, right? If you don't already know this, SNAP is an exam conducted by the Symbiosis group of institutions. Usually SNAP का caliber थोड़ा सा mid tier माना जाता है. Difficulty level के terms में it's supposed to be of medium difficulty. So most people tend to assume कि हाँ SNAP तो CAT से easy होगा, मतलब नंबर लाने बहुत easy होंगे. But reality क्या है कि SNAP में क्योंकि पेपर थोड़ा सा आसान होता है, I think ज़्यादा pressure बन सकता है आप पे, क्योंकि while you will find it easier, but then getting a good rank is not easier, right? Getting a shortlist is not easier. So take it with a pinch of salt. I think मेहनत कर रहे हैं तो number system जैसे topic पे बिल्कुल दबा के मेहनत कीजिए. Right, let's look at this one. The least number, right? And Q's are important, right? Least number, which is a perfect square. So whatever number I want it to be a perfect square. I want it to be square of something. And also divisible by each of the numbers 14, 16 and 18, right? So n is a perfect square and n is divisible by 14, 16 and 18, है ना? तो 14, 16 और 18 से divisible, जब कोई number multiple numbers से divisible हो, right? So you can combine all of this and say it should be divisible by their LCM. How do you know that? Well, if a number is divisible by 14, it will be a multiple of 14. If a number is divisible by 16, it will be a multiple of 16. तो मतलब 14 का भी multiple होना चाहिए, 16 का भी होना चाहिए और 18 का भी होना चाहिए. तो common multiple ढूंढ रहे हैं. तो it will be divisible. It will be a multiple of their LCM. That is, it's divisible by their LCM. What is their LCM? तो एक बार फटाफट इन तीनों को लिख लेते हैं. This is 2 times 7. 16 is obviously 2 to the power 4 and 19 is 2 times 9. So 2 times 3 square. LCM में सारे प्राइम फैक्टर्स आप इंक्लूड करोगे और हर प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर इंक्लूड करोगे. सो 2 to the power 4, 3 to the power 2 and 7 to the power 1, right? So we're basically saying n is a multiple of this, so n should be k times 2 power 4 into 3 square into 7, है ना? n इसका मल्टीपल है, तो मतलब इस इंटू सम इंटीजर होना चाहिए. बट अगर आप गौर से देखोगे तो n का वैल्यू भी समझ में आ जाएगा, है ना? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सारे प्राइम फैक्टर स्क्वायर्स में होने चाहिए, है ना? तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दिख रहा है मुझे कि 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर है और 3 का तो होल स्क्वायर है ही, बट एक 7k बच गया, ये भी स्क्वायर टर्म होना चाहिए.
So this is a square term if k is 7, right? So the smallest number that the question says, find the least number. The smallest value will be if k is 7, right? Other values can be k 7 into some square, right? It could be 7 into 4, 7 into 9, 7 into 25. It doesn't matter, right? But the smallest value will be if k is 7. तो अगर k equal to 7 डाल दे तो n क्या आएगा? N का minimum value or least value will be 2 power 4, that is 16, 3 square, that is 9, and 7 square, that's 49. So what I get is 144 into 49. So I know it will end in 6, but 9 into 4 36 है, but 6 से दो options है, तो multiply करके देख लेते हैं. 144 into, in fact 144 into 50 करेंगे तो क्या आएगा? 14 5 70. तो 7000 से थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए. Answer is obviously 7056. Yeah, I hope this question is clear to you. Okay, next up, अगला question. Two prime numbers x and y both greater than 2. अच्छा, दो numbers x और y हैं दोनों. अब ये important information क्यों दिया हुआ है? Prime numbers हैं तो greater than 2 क्यों दिया है? What is the property of prime numbers that are greater than 2? Right? It turns out that this 2 is a special prime number. 2 is the only prime number that is even, right? Because any prime number x and y which is more than 2, right, which is a prime that is more than 2, must be odd, है ना? तो x and y are both odd. ये तो मैंने infer कर लिया. x and y are prime, but they are also odd primes. Which of the following must be true? Can x minus y be 23? Right? Now think about it. Can odd minus odd be odd? No, this cannot be true. Can odd plus odd be 87, which is also odd? No, it cannot be. And that's what this says, right? It's not equal to this. So ये तो ठीक ही लग रही है बात मुझे. Both 1 and 2, no. Both these statements are not correct. None of the above statements is correct. No, that's not true. B is correct. So correct answer, option B. X minus y, x plus y cannot equal 87. Okay, here's question number 3. अगला question देखिए. In a row at a bus stop, not a row would be a fight. In a row at a bus stop, है ना, तो A खड़ा है. A is 7th from the left, right? So सोचो यहाँ से लाइन शुरू हो रही है. 11th लेफ्ट से 7th है. तो अगर मेरा पोजीशन, like for example, imagine if my position is 3rd, then 1, 2 and then me, right? So there will be 2 persons to my left. So if A is 7th, then there will be 6 persons to his left, okay? And B is 9th from the right, which means there are 8 persons to his right, okay? They both interchange their positions, which means if A comes here, then A becomes 11th from the left, which means there will be 10 persons, right? But ये 6 persons actually irrelevant है. तो ये अगर A को यहाँ B की जगह बिठाया जाए तो A के लेफ्ट में 10 लोग आ रहे हैं. तो A के लेफ्ट में 10 लोग हैं, राइट में 8 लोग हैं, right? So total number of people will be 10 to A's left, 8 to A's right, and then A himself, means that there will be 19 people in the row, 19 people standing at the bus stop. It's the only way that all these conditions will be satisfied. Right, let's move things ahead. Here's another one. Ye again counting wala situation ही है, right? But unlike the previous question where people were standing in a row, straight line row, here people are standing on a circle, around a circle, right? It doesn't say, but it could also be a circular table, right? What do you think the answer will be? If the 6th child is bang opposite the 12th child, and they obviously are seated evenly spaced, है ना? तो अगर equally symmetrically बिठाया जाए circle पे, and you figure out that the 6th child is bang opposite the 16th child, then how many people are made to stand in the circle?
doesn't seem like I'm getting many answers. हाँ अच्छा इसको भी समझ लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं है. So what we are given is that there is a circle. Okay. Oops, it's a horribly drawn circle. So please excuse my drawing. फिर से बनाते हैं. So there is a circle and here is a person A who is the 6th child, and here is a person B who is the 16th child, right? So if they are standing, I mean there are n number of people in this room, right? So 6th means to his right after A there will be how many people? So you will start from the 7th person and go all the way till the 15th person, and these are the number of people who are seated between A and B, है ना? Correct. So 7 से लेके 15 तक कितने नंबर हुए people हुए? So on the right hand side you have 7 plus 15, है ना? Sorry, B minus A plus 1, right? So 15 minus 7 plus 1. 15 minus 7 is 8. 8 plus 1 is 9. So on the right hand side, if you have 9 people sitting, then on the left also you should have 9 people sitting. Right? And so if you are 9 plus 9, 18, and then you know A and B themselves mean there will be 20 people on the seated around this circle, right? Seated around the circular table, right? That's the way this will work out. Right? I hope that is clear. बड़ा simple सा solution है ना. आपको बस ये काउंट करना है कि कितने लोग इधर है कितने. So जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में लेफ्ट और राइट किया था, यहाँ पे हम A और B के बीच में कितने हैं और इस तरफ से और दूसरी तरफ से कितने लोग हैं. Just count the number of persons there. Okay, here's another one that is based on divisibility rules. See if it makes sense to you. And if you look at the option choices, then what I need to figure out, is it divisible by 3, is it divisible by 11? So 3 का divisibility rule होता है कि सब चेक करें कि सब digits का sum 3 से divisible है कि नहीं. तो obviously 3 तो ignore, जितने भी 3s है उसको ignore कर देते हैं. Ones कितने हैं? 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 2 8 plus 2 10 plus 2 12 plus 2 14. So basically the sum of digits will be, I have 14 ones, the sum will be 14, and then the rest are 3s, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 3s. That's a total of 21. So clearly I'm getting a total of 35, which means it's not divisible by 3. So ये वाला हट जाएगा, ये वाला भी हट जाएगा. Right? Now the question is it divisible by 11 or not? 11 के लिए क्या करते हैं? Odd, मतलब alternate digits को add करते हैं, है ना? तो मैं यहाँ पे एक बार pencil up कर लेता हूँ इन चीज़ों को. Right? So 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, 5 plus 3 8, 8 plus 1 9, 9 plus 1 10, 10 plus 3 13, 14, 15, 18, and then 1 19. Okay, minus the rest, right? That's 1 plus 3 4 plus 1 5 plus 1 6, 9, 10, 11, 14, 15, and 16. 19 minus 16 is 3, which is not divisible by 11, which means this number is neither divisible by 3 nor divisible by 11. That's the reality of it. Before we move ahead, quick sort of info. Unacademy के बारे में, as you can see, there are so many of Unacademy's users, people who've learned on the Unacademy platform and have scored, come out with flying colors, 99 percentile, and so many of them, very very high percentiles at that, have been preparing by using the Unacademy app. So you really could be the next person to crack the elusive 99 percentile, get into one of the prestigious IIMs, right? All you need to do is enroll. There are new batches starting. If you have a GDPI call, if you have been shortlisted by the IIMs this year or other B schools this year, then join the GDPI Achievers batch. That's a batch which starts today, right? So check it out on the Unacademy app. Other option choices, there's a batch which started on the 11th of January, which is yesterday, and which is related to CAT, 2021 CAT.
and there's a batch which started, which will start tomorrow. This is a batch targeting the Maharashtra CET, right? So very, very, tailored batches which have started this month. Be sure to check them out on the, app. Make sure that you take trial sessions on the app, and also, do prepare for Unacademy Combat. That's, I think it's a very, very exciting, challenge. You get to, the last edition of the Unacademy Combat happened last Sunday. That's, 10th of January, and more will happen. And almost every Sunday, second Sunday, will happen. This combat, prize and this contest will happen. And what you stand to win are Amazon vouchers, and almost, worth 50,000, 5,000, 50,000 all the way till 10,000, right? So plenty of prizes to be won, and obviously there's also this additional thrill of how many people have you done better than, right? So there's also benchmarking that happens automatically. I think you should really check it out. If you don't already have a subscription plan, you might need to unlock the Unacademy Combat. For that purpose, use my referral code AV01, है ना? इससे unlock हो जाएगा ये. Right. Talking about subscription plans, right? There are plans going all the way from a single month to 12 or 24 months, and typically my advice goes out to students saying please choose the longer term plans, because जितना आप ज़्यादा stability के साथ prepare करते हो, few educate जितना ज़्यादा आप regularly एक platform को use करते हो, उससे benefits draw करोगे उतना better रहेगा. And above all, don't forget to use my referral code AV01. Again comes to your help here because it gives you a 10% discount. कोई भी plan choose करो, उस पे 10% off मिल जाएगा अगर आप AV01 use करते हो तो. Right. So let's come back to problems that we were solving today from number properties. Here is a question, right, based on. Okay, let me not give the hint away. Yeah, there are 4 people who clap every 20 minutes. What does that mean? So there's a person who claps every 20 minutes. He claps at a multiple of 20. The second person claps at a multiple of 30. Third person claps at a multiple of 40. And the last person claps at a multiple of 50. Right? So if you want all of them to clap together, right? If they clapped last at 10 a.m., they will clap together again only if the time elapsed is a multiple of 20, 30, 40 and 50. Right? Only if the time that has gone by is a multiple of 20, 30, 40, 50 will all of the clocks ring. Right? ये कितना आता है? 20 और 30 का तो 60 है, और 40 और 50 का 200, और 20 और 60 का कितना है? And remember, this is 40 into 5 and this is this is 20 into 10 and this is 20 into 3. And so 20 is clearly common to both of them, but the 3 and 5 are not. Right? So my LCM is 20 into 15, that's 300. Right? So 300 minutes is how long it will take for the clocks to, all clocks to ring together again. Right? 300 minutes is what? Divide this by 60, that's 5 hours. And if they started at 10 a.m. then 5 hours later the time will be 10 plus 5, 1500 hours, that's 3 in the afternoon. So 3 p.m. Option A is the correct answer for this question. Hi Ashwarya, good evening man, what's up with you? We're doing number properties. What do you do, man? Yep, here's the next question coming up on your screen, Ashwarya. Okay, got it, Ashwarya. Good job. Right? But एक बात बताओ, what do you do? Are you in college? Are you working? Are you a student? Yeah, I know you're all fine, man. What exactly do you do? Currently pursuing bachelor's. Okay, interesting. So looking at CAT, right? Good.
If you're pursuing bachelor's, then all of this should be, familiar. मतलब इस टाइप की चीज़ें एंट्रेंसेस में स्कूल में भी करते हैं. I'm not sure if you did that, but okay. Can you try answering this question? Am I saying your name right? Aishwarya, is it? A number when successively divided by 5 and 6 gives remainders of 3 and 2. 5 से डिवाइड करने पे 3 और 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2. तो अगर इनको इसी नंबर को 3 और 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर्स क्या होंगे? राइट नाउ बी केयरफुल बिकॉज दिस वन से सक्सेसिवली डिवाइडेड. राइट, व्हाट डज दैट मीन? कि सबसे पहले n था, मैंने उसको डिवाइड किया बाय 5, तो मुझे क्वोशंट मिला एज a और मुझे रिमाइंडर मिला एज r. और फिर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इफ दिस नंबर इज सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 3 and 4. ओ अभी खत्म नहीं हुआ, पहले हमने 5 से डिवाइड किया. So next division is by 6, right? What do I do? How do I divide successively by 6? I take a now, right? The quotient after the first division. इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से और फिर रिमाइंडर चाहते हैं हम. I don't know what the question is. I don't really care actually, right? But I do know the remainder is 4. तो बैक सब्स्टिट्यूट कर ले हर डिवीजन के लिए. डिविडेंड इक्वल टू, सो डिविडेंड इस डिवीजन के लिए डिविडेंड है a डिवाइड हो रहा है. डिवाइजर क्या है 6, क्वोशंट क्या है अननोन. लेट्स से क्वोशंट इज x. You only said 6x. You only said, right? And the moment I get a, I know that this is the quotient, right? So here I'll say dividend equal to divisor into, sorry, divisor is fine. Divisor into quotient plus the remainder, right? So if I take this a and substitute it here, this becomes 5 times 6x plus 4 plus r. Right? That's obviously 5 times 6 plus 5 times 4. That's 30x plus 20 plus r. ओ वेट, रिमाइंडर पता है ना, यहाँ पे तो रिमाइंडर 3 था ना, तो ये प्लस 3 हो जाएगा. सो 20 plus 3 is 23. So 30x plus 23. What happens if this is successfully divided by 3 and 4? What do you think happens? Aishwarya, you be able to answer this? डिवाइड करके देख लेते हैं, है ना. इनफैक्ट एक चीज और कर सकते हैं कि हम इसमें x के कुछ वैल्यूज डाल करके 2-3 नंबर जनरेट कर लेते हैं ना. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं x को 0 डाल दूंगा तो n आ जाएगा 23. अगर मैं x को 1 डाल दूं तो नंबर बनेगा 30 + 23 53, है ना. तो n के 2-3 वैल्यूज ट्राई कर लेते हैं. अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो पहला रिमाइंडर आएगा, तो पहला रिमाइंडर आएगा 5 से डिवाइड कर ले. 5 4 20 + 3 30 23, राइट. और दूसरा रिमाइंडर आ रहा है 4. बिल्कुल सही है. 53 के केस में 3 से डिवाइड करो. हाँ 3 17s are 51. So remainder, first remainder is 3 and second remainder 17 को हम 6 से डिवाइड करेंगे. 6 2s are 12. Oh, first division is with 5, right? Okay. 5 10s are 50, remainder is 3. 10 है remainder, 10 है quotient. तो उस 10 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो remainder 4 ही आ रहा है ना. तो either ways it doesn't matter. Remainder, initial remainder is sort of 3 and final remainder is 4.
Here's another one. Heap of pebbles is grouped, है ना, मतलब उसको 32, 40 या 72 पेबल्स के ग्रुप मतलब हीप्स बनाए जाए, है ना, इकट्ठा किया जाए, है ना. तो इकट्ठा करने के बाद बहुत सारे हीप्स बनाने के बाद यू हैव रिमाइंडर्स ऑफ 10, 12 एंड और 50. Yeah, Aishwarya, you say there is a question which you are stuck at. Which one? Go ahead and ask me, Aishwarya. I'd love to clarify. बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको? है ना, आप अपना क्वेश्चन बताना, मैं इन द मीनवेल लेट मी स्टार्ट दिस ऑफ, राइट. सो लेट्स से मेरे पास टोटल n पेबल्स है, राइट. टोटल पेबल्स मेरे पास n है. तो अगर इसमें 32 के ग्रुपिंग बनाऊं तो लेट्स से यू गेट a ग्रुप्स, राइट. 32 32 32 करके देयर आर a piles or a heaps and you have 10 remainder, which means you are left with 10, right. In the case of second second restructuring, you'll say if you have 40 pebbles to a pile, to a heap, right, then you'll say it's 40b plus 10 as well, and right, so that's 72c plus 50. Right, so find the minimum value of n. That's the question, है ना. तो यहाँ पे आपको पैटर्न नोटिस करना है. Got it, Aishwarya. I will discuss that in just a second. या पहले ये वाला कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर n को मैं 32, 40 और 72 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 18, 10, 18 और 50 आता है. बट यहाँ पे पैटर्न क्या है कि अगर आप हर डिवीजन में डिवाइजर में से अगर आप रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, राइट. इन दिस केस चेक इट आउट. 32 minus 10 is 22, right. 40 minus 18 is also 22 and 72 minus 50 is also 22, right. So it turns out, तो ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली रिमाइंडर हमेशा इक्विडिस्टेंट है डिवाइजर से, और डिवाइजर से या डिवाइजर के एक मल्टीपल से सेम डिस्टेंस पे है नंबर. तो इसका मतलब ये है कि इसको मैं रीराइट भी कर सकता हूँ कि ये जो 21 अगर मैं ऐड कर दूं तो n प्लस 22 जो है यहाँ बनेगा, 22 ऐड करके ये 32 बन जाएगा. तो इट विल बिकम 32 टाइम्स a प्लस 1. इट विल ऑल्सो बिकम 40b प्लस 22 प्लस 18 इज 40. सो इट विल ऑल्सो बिकम 40 टाइम्स b प्लस 50. And finally, it's either 32a plus 1 or it will be 40 times b plus 1, or it can also be, इसमें भी अगर 22 ऐड करेंगे तो 72 into c plus 72 बन रहा है, right? तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि n plus 22 जो है इन तीनों से डिविजिबल है, 30, 40 और 72 से. तो n plus 2 जो है इनके LCM का मल्टीपल होगा. That will be LCM into something. What is that something? What is the LCM of these numbers? So n becomes, अब LCM निकाल लेते हैं पहले. 32 is 2 power 5, 40 is 2 cube into 5 and 72 is 2 cube into 3 square, right. So clearly LCM would be 2 power 5 into 3, तो 3 का भी
3 का भी स्क्वायर ही आ रहा है ना, हाँ स्क्वायर ही आ रहा है, और 5 तो एक ही बार आ रहा है. So 2 power 5 32 into 9 into 5, 9 into 5 is 45. 2 5s are 10. 10 5. 14, 40 is what we are getting, right? And this will be n plus 22. So if n plus 22 is 1440, n will be 1440 minus 22, that's 1412. Correct answer option C is 1412. Right? Does that make sense, Aishwarya? है ना. बेसिकली हम कह रहे हैं कि पैटर्न दिखेगा. ये दो टाइप के प्रॉब्लम पैटर्न्स जो हैं बहुत कॉमन होते हैं व्हेन स्पेशली इन्वॉल्विंग डिविजन्स, राइट. फर्स्ट पैटर्न इज कि अगर एक नंबर को बहुत सारे डिवाइजर्स से डिवाइड करके सेम रिमाइंडर अगर आता है तो आप उन सब डिवाइजर्स का एलसीएम लेकर के वो रिमाइंडर ऐड कर दो उसमें, राइट. उन सब में इंडिविजुअली सब में सेम क्वांटिटी ऐड कर दो, दैट विल suffice, right. On the other hand is this pattern where the difference between divisor and remainder is a constant value, right. Divisor is always equidistant from, in a sense, the quotient is in a sense equidistant from the divisor, right. तो ये इस टाइप के approaches हैं. Now I'm going to tackle what a question on LCM and HCM. So the question that he is asking me is that the LCM of two numbers is 84 and HCF of the same two numbers is 21. And the question that I have that he has is that if the ratio of the two numbers is 1:4. है ना, यहाँ तक पता है. तो अगर इनका HCF 21 है और LCM 24 है. If the ratio of the two numbers is 1:4, let the numbers be A and 4A. ठीक है. और LCM HCF की एक प्रॉपर्टी होती है कि LCM into HCF is always equal to A into B. Right. So LCM here becomes, ये 4 जो है इसके अंदर चला जाएगा ना LCM के लिए. So it's not 198, it's going to be 1228. है ना. तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. परफेक्ट स्क्वायर कहां से आ गया? LCM इज 84, HCF इज 21. ठीक है. अब ये जो नंबर्स हैं हमने इनको A और 4A अज्यूम कर लिया है ना. इनफैक्ट इसको A और 4A अज्यूम करने की जगह आप 21A और 21B भी अज्यूम कर सकते हो. एक 21 तो ऐसे ही कट जाएगा. तो आप बोल सकते हो कि 81/21 which is 4 should be the product of A and B. I can't be held responsible for this, right. A into B. What is the minimum number of pebbles that the heap contains, right. total pebbles की बात कर रहे हैं. तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 4 हो, वो नंबर्स खुद 1, तो उनका प्रोडक्ट भी 4 आ रहा है और उनका रेशियो में भी 4 आ रहा है, तो नंबर्स जेन्युइनली 1 और 4 ही होंगे ना. सो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेबल्स दैट द हीप कंटेन्स, राइट. सॉरी, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना. तो देन द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स विल बी 4. है ना. डज दैट मेक सेंस आदित्य? कि हमने कहा कि अगर दो नंबर्स दिए हुए हैं LCM into HCF is equal to A into B, LCM और HCF दोनों नंबर्स जो है HCF के मल्टीपल्स होते हैं. तो A और B को 21, एक्चुअली इसको छोटा A लिखना चाहिए था. अगर आप कंफ्यूज हो जा रहे हो तो नो प्रॉब्लम, फॉरगेट दिस लाइन फॉर नाउ, राइट. आई नो नंबर्स आर, लेट द नंबर्स बी 21A and 21B, right. And if I know this, then LCM into HCF will be 21A into 21B. तो A into B मत कैप्चर होने देना ना.
राइट. अगला क्वेश्चन देखते हैं आदित्य. आई एम नॉट श्योर इफ दैट वाज क्लियर. अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा. Let me give you a minute to try this question. I'm going to be just grab a quick bottle of water and come back. आप 1 मिनट ये क्वेश्चन ट्राई करो in the meanwhile. Right, there you go. Yeah, Aishwarya, are you commenting? कुछ कह रहे हो तो प्लीज बताओ यार. In the meanwhile, मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करें. The difference of two numbers is 1365. On dividing the larger number by the smaller number, we get 6 as question. तो डिवीजन की बात कर रहे हैं. जहां भी क्वेश्चन में डिवीजन का मेंशन हो तो आप डिवीजन आइडेंटिटी यूज करो. राइट. Oh wait, you're saying, okay, एक बार फिर से करते हैं ना. आपका जो क्वेश्चन था पहले वही वाला सॉल्व कर लेते हैं. Let the numbers be 21A and 21B, right? Why am I assuming this? Because HCF is given to me as 21, correct? और दूसरा इंफॉर्मेशन आपने बोला है कि इनका LCM दिया हुआ है as 84, ठीक है, नो प्रॉब्लम. प्रॉपर्टी होती है LCM into HCF is A into B. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 21A into 21B should be equal to 84 into 21. तो एक 21 यहाँ कट जाएगा, एक 21 into 4 हो जाएगा, which means A into B is 4, है ना. अब सोचो A into B 4 आ गया और क्वेश्चन में एक कंडीशन और दिया हुआ है, रेशियो ऑफ द नंबर्स, which means 21A upon 21B is given to me as 1 upon 4, है ना. तो यहाँ 21 ऑब्वियसली कट जाएगा. तो इससे समझ में आ रहा है कि A by B भी 1 by 4 है. तो दो ऐसे इंटीजर इमेजिन कर सकते हो जिनका प्रोडक्ट 4 है और जिनका रेशियो 1:4 है. तो नंबर्स क्या होंगे? क्लियरली A is 1 and B is 4, है ना. बट आपने क्वेश्चन पूछा था फाइंड द लार्जर नंबर. तो लार्जर नंबर तो 21B आएगा ना. सो द लार्जर नंबर इज 21 into B. That's 21 into 4, 84. तो आंसर तो सेम ही आ रहा है. मैंने पूरा मतलब आंसर मेंशन नहीं किया था वहां पे, बट आई डिड से A and B are going to be 1 and 4 respectively, and if B is 4 then the number itself will be 21 times 4, so it will become 84. Does that make sense? ये बात समझ में आई? Yeah, I'm sure you got that, है ना. अब वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं. द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1365. वो आखिरी में यूज करेंगे, राइट. बट बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, राइट. इफ यू डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर वी गेट 6 एज क्वोशिएंट. तो ये इक्वेशन वही यूज करेंगे डिवीजन के केस में. डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट. तो यहाँ पे you are dividing the larger number, let's say A, by the smaller number, let's say B. तो यहाँ पे larger number A है, smaller number divisor होगा B, quotient दिया हुआ है 6 और remainder दिया है 15. The moment you say remainder is 15, आपको पता है कि B जो है 15 से तो बड़ा होगा, है ना. remainder 15 आ रहा है तो what you are dividing has to be more than 15. Okay, we already know this, right? So what do you get? You get A as 6B plus 15. And you also know that if A is the larger number, then A minus B is also 1365. तो बस इसमें आंसर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 6B plus 15 minus B is 1365.
right? And if I solve, I'll get 6b minus b is 5b. This is equal to 1350, which means I'll get b as 5 2s are 10, 5 7s are 35, 270, right? So smaller number 270, larger number 270 into 6 plus 15, but we don't care about that. Option B. Yeah. Cool. Next up, देखो again number properties का काफी commonly मतलब इस टाइप के फॉर्म में आता है क्वेश्चन. आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्वीट्स इक्वली अमंग, देखो सोचो कि बहुत सारे स्वीट्स है मेरे पास. इफ आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 25 चिल्ड्रन, अगर यू नो ऑब्वियसली यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इक्वली, राइट, विच मीन्स हर स्टूडेंट को सेम नंबर ऑफ, हर चाइल्ड को सेम नंबर ऑफ स्वीट्स मिलते हैं. सो इफ ईच चाइल्ड गेट्स ए स्वीट्स, then 8 sweets are remaining, right? So the number of sweets n will be, हर चाइल्ड को a मिले हैं स्वीट्स, और ऐसे 25 चिल्ड्रन है तो 25 8 स्वीट्स बट गए और 8 रिमेनिंग है, right? But if the number of children had been 28, then this would also be 28 times b per student, right? And you're left with 22, right? So what is the smallest value of n, right? Find the smallest value of n. है ना. तो यहाँ तो मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूँ, ये तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा ना ये. बिकॉज सी दो पैटर्न हम सीख चुके हैं. इज द रिमाइंडर सेम? नो. इज डिवाइजर माइनस रिमाइंडर इक्वल? 25 माइनस 8 इज 17, 28 माइनस 22 इज 6. तो जब ये दोनों ट्रिक्स ना काम करें ना, ट्रिक्स क्या ढूंढेंगे? Either A is the remainder equal for all divisions, right? Answer is no. And 2, if it is so, अगर yes आ जाए तो आप बोलोगे LCM plus that remainder, right? And the second question is divisor minus the remainder equal for all divisions, right? If the answer is yes, then you'll say LCM minus that, then let's say this equal value is a, so it will be LCM minus a, which the number is going to be, right? But यहाँ पे ये दोनों ही conditions fulfill नहीं होती हैं. यहाँ पे in fact अलग अलग रिमाइंडर्स आ रहे हैं. एक में 8 आ रहा है, दूसरे में 22 आ रहा है. तो what is the smallest possible number of sweets? Find the smallest value. तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं. 328, अगर मैं 25 से डिवाइड करूँ 328 को, 25 1s are 25, है ना, 7 बचेगा 78, 25 3s are 75, तो इसका रिमाइंडर तो 3 आ रहा है. ऑब्वियसली गलत हो गया ये. इधर 25 1s are 25, 98, 25 3s are 75, रिमाइंडर 20. यहाँ पे भी रिमाइंडर 8 नहीं आ रहा है. यहाँ रिमाइंडर 8 आएगा. 25 1s are 25, 10 बचा, 108, 25 4s are 100, रिमाइंडर इज 8. सो R1 यहाँ पे 8 आ रहा है. R2 चेक करते हैं, 22 से डिवाइड करो. 22 1s are 22, I'm left with 13, 138. 22 into 6 is 132. So even this is not correct. The correct answer will be option D. Data given to us is inadequate here. तो यहाँ पे बेसिकली हमने दोनों को कंबाइन करके चेक कर लिया. ओह वेट, 28 से डिवाइड करना था मैंने. एक मिनट. दूसरा वाला एग्जाम, तीसरे वाले केस में मैंने 22 से डिवाइड करके चेक कर लिया. जस्ट नोटिस्ड, है ना. सो 28 से डिवाइड करके देखते हैं इसको, है ना. 358 डिवाइडेड बाय 28. 28 1s are 28, 7 बच गया 78. 28 इंटू 3 नहीं जाएगा, 2 ही जाएगा. 28 इंटू 56, राइट. आई एम गेटिंग अ रिमाइंडर ऑफ 22. सो इसका क्वेश्चन का आंसर सी है. Right? Okay, wait. I think Ashwarya has another question for us, right? The least number having 4 digits that is also a perfect square. But that's it. Is that the question? Smallest 4-digit number which is also a perfect square. यही है question क्या? ये बड़ा easy question है. This is what
या तो ये तो ऐसे चेक करो ना, 30 स्क्वायर क्या होता है 900, राइट? रिमेंबर द क्वेश्चन इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. अब तो बहुत सारी चीजें कर सकता हूं. अगर मुझे ऑप्शंस नहीं दिए होते तो मैं ये करता 30 स्क्वायर सोचता, है ना. 30 स्क्वायर होता है 900, 3 डिजिट्स में है बट 900 पहुंच चुका है तो 1000 पहुंच ही जाएगा. 31 स्क्वायर इज, इफ आई चेक आई गेट, मुझे तो याद है, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर इट, बट 31 स्क्वायर इज 961. अब 32 स्क्वायर 1024. देयर यू गो, दैट्स द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर. नन ऑफ दीज जो आपने लिखा है ना, नन ऑफ दीज 4 डिजिट्स में सबसे छोटा वैल्यू 1024 होगा, है ना. ठीक है, ये एक अप्रोच है. दूसरा है, अगर ऑप्शंस दिए होते तो मैं ऑप्शन से भी मैं चेक कर सकता था. 1004, 1006, 1016 था ये, यानी 1036 है, नन ऑफ दीज, राइट. तो दूसरा चीज मैं ये कर सकता हूं कि मैं लास्ट डिजिट चेक कर सकता हूं, क्योंकि इफ n स्क्वायर इज इक्वल टू 1004 तो n का लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, n का लास्ट डिजिट 2 हो सकता है. तो ये पॉसिबल लग रहा है मुझे, है ना. 6 हो सकता है लास्ट डिजिट क्या. तो अगर स्क्वायर करने पे 6 आ रहा है एंड में, तो समथिंग इनटू इटसेल्फ विल बिकम 6, राइट. तो इट्स ओनली पॉसिबल इफ इट्स आइदर एंडिंग इन 4 और 6. अगेन दिस इज आल्सो पॉसिबल एंड दिस इज आल्सो पॉसिबल. तो ये लास्ट डिजिट वाला चेक करना ज्यादा हेल्पफुल है नहीं, है ना. तो बेटर है कि आप 4 डिजिट बोला है तो सपोजिंग, अब एग्जांपल लेते हैं ना, सपोजिंग द क्वेश्चन हैड बीन फाइंड द लार्जेस्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट स्क्वायर, 5 डिजिट नंबर दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सपोजिंग ये होता है क्वेश्चन, है ना. तो फिर हम बोलते हैं कि अच्छा 5 डिजिट्स में मतलब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर तो होता है 1 फॉलोड बाय 40, 10,000, है ना. तो इसमें 2 जीरो यहां है और 2 जीरो यहां है, तो मुझे पता है 10,000 विल बी 100 स्क्वायर, करेक्ट. तो ये तो आसान हो गया. सपोजिंग हमें 6 डिजिट नंबर बनाना होता. ओके, चलो 6 डिजिट कर लेते हैं. सो देन वीड से स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विल बी 1 2 3 4 5 6, राइट. नाउ इन दिस केस अगेन आई डू द सेम थिंग. एक्चुअली यहाँ पे 2 जीरो ले लिए, यहाँ पे 2 जीरो ले लिए, तो 10 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है ना. 3 स्क्वायर इज 9. तो मुझे पता है कि अगर मैं 300 को स्क्वायर करूंगा, 300 कहां से आया, 10 का स्क्वायर रूट 3 ले लिया मैंने, इस 100 का स्क्वायर रूट 10 और इस 100 का स्क्वायर रूट 10 ले लिया, तो 300 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ बनेगा 90,000. बट मुझे 1 लाख पहुंचना है ना. तो मैं हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा मुझे, है ना. तो मैं अगर 310 स्क्वायर करूंगा तो 961 आएगा. 320 का स्क्वायर करूंगा तो 1024 आएगा, राइट. बट 310 और 320 के बीच में भी हो सकता है ना. तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ट्राई ही करना पड़ेगा 320 से कम, है ना. मुझे आई डोंट सी एनी अदर वे अदर देन ट्राई, यू नो. व्हाट अबाउट लेट्स से 319 स्क्वायर चेक करना पड़ेगा, राइट. सो आई विल मल्टीप्लाई 319 into 319, है ना. या मैं बेसिकली इसको 300 प्लस 19 होल स्क्वायर के यू नो एक्सपेंशन से भी खोल सकता हूँ ना. 19 स्क्वायर 361, है ना. 300 स्क्वायर 90,000, and then 2AB will be like 600 into 19, right? 19 into 600. Now I don't know about you, 19 into 6 114. So 11,400, 11,000 ऐड करोगे तो बन गया ना 100,000, right? So here my answer is going to be in that same range, right? All right. Well, ऐश्वर्य, मैं सारे क्वेश्चन आपके आंसर नहीं कर पाऊंगा अभी, right? I have some questions coming up on the screen. I think it's only fair that we discuss the ones that that everybody can see as a question, है ना. Right? Try this question. A number G23CG0 can be divisible by 36 if G is what value?
हो जाएगा वैसे, आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा, चलो, है ना। ये डिविजिबिलिटी रूल्स का क्वेश्चन है. दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 36, राइट. तो if a number is divisible by 36, it must be divisible by its factors, which means it must be divisible by 9, also by 4, है ना. कोई नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है? जब उसके लास्ट 2 प्लेसेस 4 से डिविजिबल हो जाए, मतलब G0 should be either 20, 40, 60, 80 or 2 zeros, right, which means G is either 0, 2, 4, 6 या 8, है ना. तो कोई भी वैल्यू उनके अलावा है तो वो क्रॉस आउट कर दो यहाँ पे, ठीक है. सिमिलरली इट्स डिविजिबल बाय 9. व्हेन इज इट डिविजिबल बाय 9? व्हेन द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, राइट. तो यहाँ पे बाकियों का डिजिट्स का सम क्या आ रहा है? 2 + 3 2, 3, 5, 5 + 6 11. सो सम ऑफ डिजिट्स इज 11 + 2G, है ना. तो अब यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं, अगर G 0 होगा, राइट, इफ G is 0, then the sum of digits will be 11. That's not a multiple of 9. If G is 2, then you get 11 + 4, 15. It's not possible. If G is 4, you'll get 4 2s are 8, 11 + 8 is 19. That's also not possible, right? If G is 6, then 12 + 11, 23. Again not possible. How about 8? 8 2s are 16 + 11, 27. Voila, this will by 9. So answer will be option A. As only, and in fact सारे check कर लिए तो more than one values are possible is also not right. There's only one value which can satisfy both conditions. So answer is G must be equal to 8. Right? I think Aditya has another question, interesting question. If you're watching this video, it's an interesting question. आप भी try कर सकते हैं. Question बोल रहा है कि HCF of these numbers 3240, 3600 and n, right? HCF of these three numbers is 36. And LCM of the same three numbers is 16 into 243 into 25 into 49. Basically 2 power 4 into, this is 3 power 5, this is 5 square and 7 square, है ना. तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, है ना. This I know this is 3600 is 36 into 100, which means this is like 2 square into 3 square, 4 into 9 आएगा ना यहाँ पे. तो यहाँ 2 square into 2 square 2 power 4 हो जाएगा, 3 का तो स्क्वायर ही आएगा और 5 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे. दिस इज 3600, राइट. एंड 3240 8 से डिविजिबल है मुझे दिख रहा है. सो 8 4s are 32, 8 5s are 40, which I can further factorize into 5 कॉमन ले लेते हैं, 81. So this basically becomes 2 cube into 3 power 4 into 5. ठीक है. अब अगर आप केवल इन दोनों नंबर्स को ही देखोगे तो इन दोनों में 2 का कौन सा पावर कॉमन है, राइट. इफ आई कंसीडर ओनली द HCF ऑफ 3240 एंड 3600, you will get 2 cube into 3 square into 5, right. But if I include the third number, then HCF is 236, which is 2 square into 3 square. तो मतलब क्लियरली 2 के 3 पावर्स कॉमन नहीं होंगे, 2 ही पावर्स कॉमन होने चाहिए. सो दिस इंप्लाइज दैट n कंटेन्स 2 square. It has to contain 2 square. It cannot contain more than 2 square. It cannot contain less than 2 square. It has to have exactly 2 square. Okay. How about 3? अब 3 में एक प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आपको क्या पता है कि इन दोनों में वैसे ही 3 स्क्वायर कॉमन था, ठीक है, और HCF में भी 3 स्क्वायर कॉमन है, राइट. तो तीसरे नंबर में 3 स्क्वायर भी हो सकता है और 3 क्यूब भी हो सकता है और 3 power 4 भी हो सकता है, राइट. n can contain, because think about it, if n contains 3 क्यूब तो आप कहते हैं इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू वही लेंगे, तो मिनिमम वैल्यू फिर भी 2 ही आ रही है ना. सो n can contain 3 स्क्वायर, 3 क्यूब और 3 power 4. You would still count it as 3 square. And does n contain 5? No. N can only contain these two factors, because if n contains 5, then that will also come in the HCF, right. और तीसरा फैक्ट है कि अगर आप LCM देखोगे तो LCM में 7 है, जो पहले दोनों नंबर्स में नहीं आ रहा है. तो क्लियरली 7 जो है n में ही कंटेन होगा, राइट. सो n does definitely contain all the powers of 7 that are contained in the LCM. So
कंटेन 7 स्क्वायर. सो 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर तो पक्का सही है. अब एलसीएम की बात करते हैं. एलसीएम में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं. देखो 2 का हाईएस्ट पावर 4 है, राइट, इमटेरियल बिकॉज आई ऑलरेडी नो व्हाट इज कंटेन विद इन एन, राइट. बट एन में हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इज 5, राइट. कैन यू सी दिस, राइट. नाउ वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कि n में 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 स्क्वायर तो मिनिमम होना चाहिए. बट क्योंकि एलसीएम इज 3 पावर 5 तो इन तीनों में 3 का हाईएस्ट पावर 5 होना चाहिए. सो क्लियरली n contains 2 square 3 power 5 and 7. So that's my answer, right. What do I get? 4 into 243 into 7, right. That's your answer. Whatever it is, just calculate कर लीजिएगा आप, right. Right. Hope that's clear to everybody, right. Unfortunately I've really run out of time, so I had plenty of other questions to discuss, including some questions are based on Venn diagrams, but we won't be able to discuss that today. I'm sorry guys, but nonetheless I hope you guys learned something in today's session, right. Maza aaya hopefully. Do keep learning with us. I think mera this batch, this course that I'm running will continue. Snap का course चलता रहेगा, but there are chances कि मैं इसका timing थोड़ा सा tweak करूँ. So keep following me, but more importantly do attend classes on the Unacademy app. में special classes भी मैं खूब सारे करूँगा, right. I know I haven't been telling you which what special classes are happening from my end. So don't worry, next class onwards I'm going to keep sharing the schedule as well. So do join me on Unacademy as well on the app. All you need to do is download the app, install it, and you can start learning. In order to access special classes, you will need to unlock special classes. You can do so by using my referral code. Basically, अगर आपको special classes attend करने हैं तो unlock करने के लिए use my code. That's AV01, right? Use this code to unlock free classes, right? And even after installing the app, if you want to purchase a plan there, a subscription there, remember AV01 gives you a 10% discount on any plan that you choose, right? तो एक बार ट्राई कीजिए, Unacademy ऐप पे भी थोड़ा ट्राई कीजिए. There's plenty of advantages that come to you. Okay, well, last parting words. Do like and share this video. आदित्य अगर मजा आया thumbs up जरूर क्लिक करना. Also check out my Telegram channel. That's Unacademy का channel है CAT4MBA. मेरा channel Anand for Quant is where you can find you can post, you can find my schedule, you can find information about my classes and everything at this Telegram channel. That's I'm highlighting it here as Anand for Quant, है ना. ये भी Unacademy का ही channel है मेरा, right? तो सारे sessions का schedule आपको यहाँ मिल जाएगा, right? Thank you for your time. I hope you guys enjoyed this. Have a great day and bye bye.